गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार एवरीवन, जहाँ पर भी आप जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं. सो वेलकम टू टुडेज सेशन. द टॉपिक इज सीक्रेट्स ऑफ वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल issues reversals. We have a special guest today with us who is a renowned expert in this field. एंड फ्रेंड्स, मुझे पता है कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वेट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं. एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर टुडे. आई एम प्रशांत सैनी. आई एम द मॉडरेटर ऑफ दिस सेशन. शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. हैव यू एवर फेल्ट दैट योर वेट और हेल्थ इश्यूज आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट? एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों का आंसर होगा येस. एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर टुडे. सो जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, इनका नाम आप सभी जानते हैं, ज्योति मंडल. शी इज़ अ हेल्थ कोच, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर एंड अ योगा इंस्ट्रक्टर. शी हेल्प्स पीपल इन वेट मैनेजमेंट, diabetes reversal, thyroid reversal, and PCOD. So, friends, Jyoti will be sharing her valuable insights and tips on how we all can overcome these challenges and lead a healthy and fulfilling life. इससे पहले कि मैं स्टेज ज्योति को दूं, मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं. She's grown up in Visakhapatnam. She was always passionate about health and fitness. अपनी बैचलर्स पूरी करने के बाद इन्होंने योगा प्रैक्टिस शुरू की एंड शी फेल इन लव विद इट. इन्होंने ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस देनी शुरू की, बट सून शी रियलाइज्ड दैट people need more. So she started learning more and more and more. She learned many things and she started helping thousands of people. Over the past few years, she's been able to help many clients reverse lifestyle issues and achieve their health goals. Her journey has been one of hard work and dedication. बट सीइंग द सक्सेस स्टोरीज, जो सक्सेस स्टोरीज मैंने इनके पेज पर इनके थ्रू जानी है, ऑल दोज स्टोरीज आर रियली इनक्रेडिबल. तो शी हैज़ हेल्प लॉट ऑफ पीपल एंड दैट इज एक्चुअली वर्थ. So, all of you, just type welcome Jyoti in the comment box, and Jyoti will be with you for next 30 to 45 minutes. And over to you, Jyoti. Thank you so much for the lovely introduction, Prashant. Before I start the session, I would like to thank you for this opportunity where I'll be glad to create awareness about different lifestyle issues and people who are in need. You're spreading awareness and you're doing a great job. Thanks once again for inviting me. Okay, so good evening, Sashrikal, Namaste, Vanakkam to all my audience, whoever is watching. I hope you're all doing great. Today, I'm here to talk about the secrets of weight loss and lifestyle issues reversal. So, what is a secret? आप सबको सीक्रेट या टिप्स अच्छे लगते हैं, राइट? कि क्या सीक्रेट हो सकता है वेट लॉस के लिए. सो लेट मी टेल यू, बहुत लोग जिम मेंबरशिप लेते हैं 1 ईयर के लिए एंड दे जस्ट गो फॉर 1 वीक और 2 वीक्स एंड देन दे से ओ माय गॉड मसल क्रैम्प्स, मसल एक्स, they stop going, right? And a lot of people, they follow intense workouts or they do random they follow random diets to lose weight, right? But once they stop, they gain all the weight back. हुआ होगा आपके केस में भी, राइट? या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिम जाते हैं बट 3-4 महीने के बाद छोड़ देते हैं तो वापस वेट गेन हो जाता है एंड दे थिंक अरे मैंने इतना मेहनत किया, आई पुट माई एफर्ट्स बट स्टिल देयर इज नो रिजल्ट. ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? सो लेट मी टेल यू, सीक्रेट्स क्या है. सीक्रेट्स यही है कि देयर इज नो सीक्रेट.
everything is open, we all know that workout करना है, right? Diet follow करना है. So 5 pillars of healthy lifestyle program. Healthy lifestyle कैसे, क्या करने से we stay fit and healthy. First is customized diet, nutrition, workout, stress management, and sleep quality. These are the 5 pillars of healthy lifestyle. So I'll provide you a lot of information, interesting stories, examples, and I hope you will be glued to your seats till the end of the session. बहुत सारे insights मिलने वाली है. If possible, you can just keep pen and paper ready, and you may ask a lot of questions at the end. I'll be happy to answer that. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. 5 pillars क्या है? डाइट, न्यूट्रिशन. सो सबसे पहले डाइट मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि कम खाना होता है और स्टार्व करनी होती है, राइट? और मील स्किप करने होते हैं. बट इज दैट राइट? इज दैट हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट? नॉट एट ऑल. व्हाट इज हेल्दी वे ऑफ वेट लॉस? आपने देखो, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, patients when they get admitted in hospital, they survive on saline glucose, right? They eat fruits for almost 15 days, 20 days, or 1 month. Once they come out of the hospital, they also lose weight. But how do they look like? They look very pale, weak, energyless, right? That is because of they have lost weight in unhealthy way. What is healthy way? When you eat proper food, take your nutritions, do regular workout, manage your stress, improve your sleep quality, and then when you're losing weight, that is the healthy way of losing weight. एंड वेट लॉस करने के बाद कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आनी चाहिए, ना ही वेट रिबाउंड होना चाहिए, राइट? सो दैट इज हेल्दी वेट लॉस. So if you see the statistics, 75% of urban population are suffering from obesity, and the leading root causes are diabetes, thyroid, PCOD, PCOS, hypertension, and lot of chronic diseases, various health issues, right? So the mindset is, अगर कोई भी हेल्थ इशू आती है, people start going to hospital, they visit the doctor, they start taking medicines, and some people continue taking medicines. कुछ लोग नहीं लेते हैं, अच्छी बात है. But instead of depending on medicines for lifelong, think about lifestyle change. Depend on your food, right? So when you do your lifestyle change, that means you're preventing lot of health issues. You're not falling in that zone. सो आप अगर देखते हैं आपके ही फैमिली में या फिर आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड सर्कल्स में, 1 in 5 people will have some or other health issues, right? And they start doing some home remedy for some time, but why not make it a lifestyle change, है ना? सो जनरली क्या होता है, सबसे पहले जानना है कि फैट एक्यूमुलेशन क्यों होती है, ओवरवेट क्यों होता है, व्हाई पीपल गो आउट ऑफ देयर बीएमआई रेंज. So let me tell you interesting science behind the body. Okay, why people start gaining weight? Whenever you are consuming food, your food is converting into glucose molecules, and this glucose has to be absorbed by all the cells and organs in the body. That's how you get energy. कहते हैं ना कि आप जो भी खाना खाते हो, आपका शरीर उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करनी चाहिए, तभी आपको प्रॉपर एनर्जी मिलती है. लेकिन समटाइम्स योर बॉडी और योर सेल्स ऑर्गन्स डज नॉट एब्जॉर्ब द ग्लूकोज. तो क्या होता है, ये जो भी खाना खाते हैं, ग्लूकोज सभी ब्लड स्ट्रीम में रह जाती है पार्शियली, एंड पार्शियली इट एंटर्स इनसाइड द सेल्स. अगर आपको पार्शियल ग्लूकोज ही मिल रहा है सेल्स को, तो एनर्जी लेवल्स भी लो हो जाती है, right? And the entire day you start feeling weak or lethargic or tiredness.
आपको सिर्फ सोने का मन करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। यू फील कि अरे क्या कितना काम करें। ब्रेन फॉग, आपके माइंड में वो थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो क्या होता है, पार्शली जो ग्लूकोज है ब्लड स्ट्रीम में रह जाती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू फैट सेल्स, एंड वो ऑर्गन्स के चारों तरफ जमा करने लगती है। इट स्टार्ट्स accumulating around the organs. That's how belly fills with fat. Not only belly, this fat accumulation happens wherever it finds place. In the belly area, thighs, arms, आपने देखा होगा different body shapes होते हैं. किसी को fat accumulation on the this arms, or on the upper part, or in the only in the belly area, or only in the lower body, right? So why different body types? It says there are different health issues. For example, people who are facing thyroid issue, they can see weight gain all over the body, right? People with unhealthy liver, they can see more of pot belly, right? Alcoholic fatty liver, yeah, or non-alcoholic fatty liver. People who have PCOD or estrogen body type, like post pregnancy, mostly lower body section में weight accumulate हो जाता है, fat accumulate हो जाता है. एंड ऑर्गन्स के चारों तरफ अगर फैट accumulation हो रहा है, दैट मीन्स that is visceral fat, the stubborn fat. Sometimes no matter what you do, your fat doesn't go away, right? अरे कितना डाइट करते हो या फिर वर्कआउट करते हो, sometimes it happens कि कितना भी करो वेट जाता नहीं है ना? तो why this happens? Because रूट कॉज को फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. I'll talk about what is the root cause, okay? But let me come back to the second pillar. तो हम डाइट के बारे में बात कर रहे थे. Don't eat less, don't eat more, eat right. The right stuff in the right quantity. डाइट मतलब कम खाना नहीं होता है, डाइट मतलब स्टार्व करना नहीं होता है, सही खाना होता है, राइट? सो क्या खाने से सही रहेगा, एवरीथिंग आई टॉक अबाउट. लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन, द सेकेंड पिलर ऑफ लाइफस्टाइल चेंज. न्यूट्रिशन क्या होता है? अभी बहुत लोग बोलते हैं कि न्यूट्रिशन लाइक वाइटामिन मिनरल्स, है ना? हमें सही तरीके, हम वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं, सब में अलग अलग वाइटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, राइट? या सो हमारे खाने से हमें सब कुछ नहीं मिलता है ना? यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. सो वी डोंट गेट एवरीथिंग फ्रॉम आवर फूड. देर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल गैप्स. फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को वाइटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी होती है, राइट? सो इफ यू सी द ब्लड रिपोर्ट्स, आप ऑडियंस जो भी देख रहे हैं, अगर आपके खुद के ब्लड रिपोर्ट्स हैं, या फिर आपके पेरेंट्स या फैमिली में किसी का भी ब्लड रिपोर्ट है, कोई ना कोई वाइटामिन डेफिशिएंसी, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, हाई ट्राइग्लिसराइड्स होगा, या फिर कोई आयरन लेवल्स कम होगा, या हेमोग्लोबिन कम होगा. तो व्हाई दिस हैपेंस? क्योंकि खाने में जो कमी होती है, उस कमी के कारण ही विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज होती है, एंड दैट्स हाउ हार्मोन्स गोस आउट ऑफ बैलेंस, राइट? सो न्यूट्रिशन क्या है? हमारे खाने में जो कमी है, उस कमी को पूरा करना है. खाने से सब कुछ नहीं मिलती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सोर्सेज प्रोवाइड करनी होती है बॉडी को, right, based on the deficiencies. Okay, now coming back to the third pillar of lifestyle. Third pillar क्या है? Workout. So regular workout really helps in your weight loss journey or to stay fit. रेगुलर वर्कआउट, जैसे आपका कोई भी फेवरेट स्पोर्ट ले लो, एनी फिजिकल एक्टिविटी विच you love, for example badminton, cycling, swimming, or yoga, exercise, anything which you love, do at least for 30 to 45 minutes or 1 hour if you have time. एक schedule बना लो, एक routine बना लो, that will greatly help you. And lot of people think कि weight loss वर्कआउट करना है, अच्छे से वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, इंटेंस वर्कआउट करना है, बट दे फॉरगेट अबाउट देयर डाइट, न्यूट्रिशन एंड द अदर पिलर्स. सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, वर्कआउट वर्क्स 20% ऑन द बॉडी फॉर फिटनेस. डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, these work 70 to 80% on the body.
सभी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग बहुत सारा जंक फूड खा लेते हैं बाहर, या फिर रैंडम डाइट फॉलो करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करते हैं, रैंडम डाइट फॉलो तो करते हैं बट काम नहीं करता, है ना? कभी कभी वो वर्क नहीं करता, क्योंकि वो जेनेरिक है, वो कस्टमाइज नहीं है। हर एक का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। एवरीवन्स बॉडी टाइप इज नॉट सेम। The diet should be customized according to your root cause and according to your body type. That's how it will work with the proper guidance, proper coaching, right? Now, जैसे मैंने कहा, वर्कआउट वर्कआउट जो है 20% ही काम करता है। उसके साथ साथ आप जब बॉडी बॉडी आपका काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड विद ग्रेट इंटरेस्ट, मोटिवेशन। नाउ your company is paying you good, okay, suddenly सोचो कि क्राइसिस आया and your company cut your salary half. Would you be interested to work with the same motivation and interest? No, right? Generally हमें वो इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि हमारी सैलरी कट कर लेंगे तो हम क्यों काम करेंगे, ऐसा सोचते हैं। सिमिलरली the organs, hormones, cells that also thinks कि अरे ये बंदा तो मुझे प्रॉपर फ्यूल नहीं दे रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों काम करूं? That's how hormones goes out of balance, है ना? So it's very very important to bridge the nutritional gap along with your diet and workout. So these are the three pillars. Now coming to the fourth pillar, that is stress management. स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी बहुत लोग, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप फॉर 10 12 hours, 13 hours, 15 hours, right? They live sedentary lifestyle. They face lot of stress in their work, relationship, और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इफ दे डू नॉट मैनेज स्ट्रेस, क्या होता है? cortisol hormone goes out of balance, and you start seeing fat mostly in the side belly areas because of stress. कुछ लोग स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, फटीग, ब्रेन फॉग, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अगर आपका साइड बेली एरिया में, वेस्ट में, बैक में, हिप एरिया में फैट अक्यूमुलेटेड है, दैट मीन्स this is mainly because of stressed out body type. Okay, और स्ट्रेस्ड आउट बॉडी टाइप अगर होता है तो वेट लॉस प्रोग्रेस भी बहुत स्लो होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको स्ट्रेस मैनेज करना होता है। Okay, now coming to the fifth pillar of lifestyle, that is sleep. Did you know that 7 to 8 hours of adequate sleep is really important, because most of your hormones balance during sleep. If there is not proper sleep, then the lack of sleep can also it is linked to various health issues like type 2 diabetes, chronic diseases. And इफ यू सी, स्लीप जो है, अगर 30 40 years के बंदे में, लाइक अगर उनका स्लीप बहुत ही लो है, लाइक दे आर स्लीपिंग ओनली फॉर 4 hours, 5 hours or 3 hours, the testosterone levels goes low, and that is where people start facing infertility issues. sperm quality low हो जाते हैं, testosterone low हो जाता है, hormonal imbalance होते हैं। People with 50 60 years or 40 years, they if they are sleeping very well, then their testosterone levels will be high. They will have that great energy levels. अभी का जो लाइफस्टाइल है काफी चेंज हो गया है, right? So lack of sleep is linked to various health issues, and why we are seeing infertility issues, men and women both they are facing, because I see a lot of clients who come to me for infertility issues. The lifestyle is really different, so we have to address this root cause. और ये मेडिसिन से सिर्फ नहीं होता है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, राइट? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर खाना, स्ट्रेस मैनेज करना। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू कीप अ स्केड्यूल फॉर दिस, राइट? एक रूटीन बनाना पड़ता है। अभी आप बच्चे को स्कूल भेजते हो, बच्चे के पीछे लगे रहते हो, तो उनका एक रूटीन बनता है, वो जरूरी है, वो प्रायोरिटी है।
तो उसी तरीके से अगर आप खुद को भी प्रायोरिटी देते हैं, देन यू स्टे फिट, यू प्रिवेंट वेरियस हेल्थ इश्यूज, तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं. I hope you are getting my point. So these are the 5 pillars of healthy lifestyle. Now I'll talk about lifestyle issues. आप में से या फिर आप अपने फैमिली में या रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में देखते होंगे कि बहुत लोगों को डायबिटीज होता है, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, थायराइड, PCOD, mostly in girls, polycystic ovary syndrome or disease, irregular cycles, right? Hypertension, arthritis, knee pains, बहुत ही young age में. If you see, a lot of people are facing cardiac arrest, heart attacks in their 40s, 30s, 20s, right? So this is because of poor lifestyle. What happens when we start unknowingly we start going in poor lifestyle, क्योंकि अगर ठीक है फ्रेंड्स से मिले, चलो स्मोकिंग ड्रिंकिंग हो जाता है, और when we go out we start eating all those junk food, we order, and even when we are at home we look for Zomato, Swiggy, है ना. So yes, there are food, हेल्दी फूड अवेलेबल, बट हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाता है कि चलो आज कुछ अच्छा खाते हैं. तो वो हैबिट बन जाती है. दैट इज लाइक पुअर लाइफस्टाइल अगेन. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर ईटिंग मोर ऑफ कार्ब्स और जंक फूड, लॉट ऑफ फैट इज अक्यूमुलेटिंग. तो वो ब्लड क्लॉट जैसे फैट अक्यूमुलेट हो जाते हैं. ये फैट क्या है कि आर्टरीज के लाइन में रह जाते हैं, लाइक फॉर्म ऑफ लाइक बॉल्स. इफ यू से दैट कि एक रिवर, एक नदी अगर बह रही है, if water is flowing smoothly, if you put big rocks in between the flow, what will happen? The pressure of the water, it will become slow, है ना. या फिर वो अपना रास्ता चेंज करने लगती है अगर आप बीच बीच में एक पत्थर रख देते हैं. तो ऐसा क्या होता है, अगर रास्ता चेंज कर लेती है या फिर स्लो हो जाती है. सिमिलरली आप रिलेट कीजिए blood circulation in the body. If the blood circulation is happening smoothly, but if there are fat cells in between the arteries, what happens? The blood pressure will be low or high, or it changes the direction, and that's how the organs are not receiving proper oxygen. That's how cardiac arrest, heart attacks, various health issues starts coming up, right? I hope you're getting my point, and you can also drop any questions if you have. Meanwhile, I'll continue. Okay. So, lifestyle issues, I was talking about this. Diabetes. What happens in case of diabetes? Mainly, the root cause of diabetes is insulin resistance. You may not understand the technical term, but I'll tell you in layman terms, like insulin resistance. Insulin is a hormone which is produced in pancreas. अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. सोचो कि आपके घर में एक गेस्ट आए हैं. ठीक है, एक दिन एक गेस्ट आए हैं, आप सर्व कर रहे हो. दूसरे दिन 10 लोग आए हैं, यू आर सर्विंग 10 पीपल. तीसरे दिन 100 लोग आए हैं, यू आर सर्विंग 100 पीपल. बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम विल बी फ्रस्ट्रेटेड, यू विल बी थिंकिंग लाइक हाउ मेनी गेस्ट आई हैव टू सर्व एवरी डे. यू विल नॉट फील लाइक सर्विंग, राइट? सिमिलरली when you're eating food, your insulin hormone spikes. वो समझता है कि अच्छा खाना आया है, मुझे उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है. लेकिन आप जब खाते रहते हो, मंचिंग करते रहते हो, इंसुलिन हार्मोन भी थक जाता है. इट थिंक्स कि मैं कितना ग्लूकोज को कन्वर्ट करूं, कितना सर्व करूं, है ना. तो इट ऑल्सो नीड्स रेस्ट. दैट इज वाई वी से डोंट कीप ऑन ईटिंग, just eat right quantity in 2-3 meals, 4 meals, right? Maximum 3 meals. So that is आपका इंसुलिन हार्मोन अगर काम करते रहता है, at one point of time it will think कि अब मैं नहीं करूंगा. That's how hormones goes out of balance, because वो भी थक जाता है, and it feels resistant to the cells. Actually, insulin hormone should supply the glucose inside the cells, but when the cells doors are locked, the glucose cannot enter inside the cells. तो क्या होता है, सारा ग्लूकोज जो है ब्लड स्ट्रीम में रह जाता है, नथिंग बट शुगर. Over a period of time, if insulin resistance is happening, that means
the sugar levels in the blood is rising, right? If you see the blood report of a diabetic patient, unka sugar levels almost 150, 200, 300, 400, right? It keeps on rising. If they don't treat it, it just keeps on rising, and it one thing is linked to another. तो धीरे 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 hormones out of balance जाना, diabetes से फिर fatty liver issue, and then chronic issues. It leads to various things like आप symptoms भी देख सकते हैं diabetes patients में. Frequent urination, right? Hair fall, they can't stand for long, their wound doesn't heal quickly, right? Blind vision, eyesight हो जाती है अगर sugar levels बढ़ जाती है तो, right? So these are the symptoms people can see in diabetes. तो क्या करना चाहिए? What to do when there is diabetes? Again, lifestyle change is the solution. It's not about depending on metformin or medicines for long time, because medicines आप जब तक लेते हो सही रहता है, but once you stop, again the problem will be the same, right? So it's medicines are not the solution, lifestyle change is the solution. Change your food habits, stop eating junk food, do workout, do go for walk, nature walk, manage your stress, and then अच्छे से वो sleep quality, it should be proper 7 to 8 hours quality sleep. It's not like see a lot of people, they sleep for 7 to 8 hours and still they don't feel refreshed in the morning. Some people sleep for 6 7 hours, 6 or 5 hours, still they feel energetic in the morning, you know. So the quality sleep is very important, right? Okay, so I hope you understood the root cause of diabetes kya hota hai. Again, the lifestyle change. Now let me talk about thyroid. So I'll talk about four lifestyle issues. Okay, diabetes, thyroid, PCOD, and hypertension, stress. Okay, so the second point, thyroid. Okay, thyroid is, okay, I'll talk about it. Thyroid is something which is i- if you see, there's a butterfly gland, a gland, thyroid gland, which is in butterfly shape. What happens is the thyroid hormone, sometimes it goes out of balance, the gland does not function properly. So the thyroid hormone is linked to your metabolism. Means whatever food you're eating, the cells, it is connected, all the cells are connected to thyroid hormones, and hence जो जिसको thyroid होती है, they start gaining weight all over the body. And it is said, research says that 70% of women are facing thyroid issue, because extreme stress can lead to this issue, right? So thyroid actually ये secondary reason है, but the primary reason is it is linked to liver. अगर थायराइड है, दैट मीन्स फैटी लिवर इशू हो सकती है या फिर अनहेल्दी लिवर हो सकती है. क्यों? बिकॉज अगर आप थायराइड रिपोर्ट देखे होंगे किसी का, या फिर तो उसमें 3 वैल्यूज होते हैं, TSH, T4 एंड T3. सो द कन्वर्शन ऑफ T4 टू T3 जो होता है, कन्वर्शन, दैट हैपेंस इन लिवर. अगर वो कन्वर्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, देन आपका TSH हाई हो सकता है, एंटीबॉडीज हाई हो सकते हैं, राइट? सो अगर लिवर अनहेल्दी है तो वो कन्वर्शन प्रॉपर नहीं होती है. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अनहेल्दी लिवर? Let me talk about why, what happens, like क्यों liver unhealthy होता है. Like there are two things, alcoholic fatty liver and non alcoholic fatty liver. non alcoholic fatty liver issue में अभी हम जो भी खाना खा रहे हैं ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक फूड है, right? All we are eating like food which is like sprayed with pesticides, herbicides, chemical, soil infertility हो रही है. The quality of the food is not same as earlier, है ना? हमारे दादा दादी के एज में जो फूड क्वालिटी था वो अभी नहीं है ना? सो जो भी हम खाना खाते हैं ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक है, एंड अननोइंगली वी आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टॉक्सिन्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वाटर फिल्टर खरीदते हो, स्टार्टिंग में वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखता है, राइट?
but after few months, after 6 7 months or 1 year, you can see lot of dirt and dust accumulates on top of the filter. तो filters भी replace करवाने होते हैं. But in our body, liver acts as a filter. We cannot change our liver, but we have to detoxify the liver. क्या होता है कि लिवर के चारों तरफ टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, और उसके कारण क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ द लिवर डेवलप्स फैट, 1 layer, 2 layers or 3 layers of fat. And there are some stages of the liver, like अगर 1 layer 2 layers of fat है, तो that is like stage 1, and then stage 2, some at the last stage liver cirrhosis भी होती है, which is extreme, and liver is completely damaged, right? So before going in that stage, when you prevent, you can actually reverse the fatty liver issue as well by making lifestyle change. तो क्या होता है अगर फैटी लिवर इशू है, सो लिवर के अंदर एक फ्लूइड होती है, वो स्लोली स्लोली बेली एरिया में लीक होने लगती है. ओके, तो इसलिए अगर आप बेली टच करते हो तो वो सॉफ्टी सॉफ्टी जेली टाइप का कभी कभी आपको महसूस होता होगा, है ना. बेली फिल्स विथ फ्लूइड एंड फैट, जैसे मैंने कहा, अगर ग्लूकोज प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन बेली फिल्स विथ फ्लूइड एंड फैट. सो दैट्स हाउ आपका बेली बाहर दिखता है. समटाइम्स फैट accumulates all over the place, right? So थायराइड के बारे में हम बात कर रहे थे. अगर थायराइड है, दैट मीन्स लिवर इशू भी हो सकती है. सो क्या करना चाहिए, अगेन लाइफस्टाइल चेंज. आई टॉक अबाउट लाइफस्टाइल चेंज इन डिटेल एट द एंड, बट बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट other two lifestyle issue. Okay. So थायराइड के सिम्टम्स क्या है. थायराइड के सिम्टम्स हेयर फॉल हो सकते हैं, फटीग, समटाइम्स डिप्रेशन, हार्ट बीट पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट रेज हो सकता है. Sometimes it can go till 140, 150, 160. Okay. And extreme tiredness, you don't feel like working, you don't feel like doing anything, आपको काम करने का मन नहीं करता है. हेयर फॉल ज्यादा होता है. थायराइड अगेन इट इज लिंक्ड टू periods, like irregular cycles in girls. They face this irregular cycles because again it is linked to one another. अगर थायराइड है तो पीसीओडी भी हो सकता है, पीसीओडी है तो थायराइड भी हो सकता है. Okay. So these are the symptoms. And next, PCOD. So what is PCOD? Polycystic ovary disease, PCOS, polycystic ovary syndrome. Okay. So if one or more diseases are there, that is nothing but syndrome. Okay. So PCOD में क्या होता है, there are different types of PCOS और PCOD. लाइक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के कारण हो सकता है, जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, ये सारे लाइफस्टाइल इश्यूज जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है, और बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है. अगर डायबिटीज है, पीसीओडी भी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है, राइट. सो हाँ, पीसीओडी में जनरली, इफ यू गर्ल्स लिसन दिस वेरी वेरी केयरफुली, ओवरीज, कुछ लोग अगर आपके रिपोर्ट्स देखते हैं, जिसको भी पीसीओडी है या पीसीओएस है, देयर योर गायनोकोलॉजिस्ट माइट टेल यू देयर आर सिस्ट अराउंड द ओवरीज. तो सिस्ट क्या होते हैं, ओवरीज के चारों तरफ बबल्स जैसा, वाटर बबल्स जैसा फॉर्म होने लगते हैं. जो यूटेरस यूटेरस है, वो यूटेरस लाइनिंग बिल्ड होती है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स, right? And estrogen hormones are responsible for your cycles, monthly cycles. अगर estrogen hormones out of balance है, then it cannot build the uterus lining. अगर आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होती है मंथली मंथली, तो क्या होती है, वेस्ट ब्लड जो है वो क्लॉट्स के जैसा वहीं पे रह जाती है ओवरीज के चारों तरफ. एंड अगर आप फोर्सफुली कुछ चीजें नेचुरली जो होना चाहिए वो नहीं हो रही है, दैट मीन्स it can damage that area, right? So that is how water bubbles start forming around the ovaries. Some people may see the cyst, some people may not see the cyst around the ovaries, but again that means unhealthy or some damage is happening inside, but it can be repaired, right? Anything can be repaired, but again lifestyle change is the solution. So inflammatory disease, like as I mentioned, cyst around the ovaries, this is because of inflammation in the body.
So if I have to talk about inflammation, a lot of people face this gastric bloating, acidity, sinus, migraine, all this because of inflammation, right? So again, insulin resistance. One more root cause of PCOD is insulin resistance. If your cells are not absorbing the glucose, that means insulin resistance हो रही है, and sugar levels keep rising and rising. If it is left untreated, that means again PCOD, polycystic ovaries syndrome हो सकती है, right? Now stress, the fourth lifestyle issue I'm talking about is stress. What happens during stress? A lot of people are working in sedentary lifestyle. They're living sedentary lifestyle. As I mentioned, people are working for 10, 12 hours, 14, 15 hours, right? Working from home, no physical activity, no movement. They just glued to their seats, working in front of laptop for long hours, right? तो क्या होता है? This can cause a lot of stress in the body, and lower body can gain more of fat. Fat accumulation happens in the side belly areas. So cortisol hormones out of balance chale jate hain, and slowly you can see mostly the hip area, waist area starts accumulating fat. And stress is related to various lifestyle issue again, जैसे कि gut health unhealthy है, like indigestion issues हो रहे हैं, तो this can also be because of stress once again. Yeah. So a lot of people, lot of my clients says कि bloating हो रहा है, या फिर digestion सही से नहीं है, constipation issues हो रही है, right? और they start seeing gray hair in their early ages. So why this is because of again stress. A lot of people start thinking too much, brain fog, depression, anxiety, all this because of stress. एक starting point होता है, so this starting point is stress. So again, what to do? Very very important thing to manage stress, not only with diet but also with breathing exercises. Yoga, pranayama, meditation will definitely help to manage stress. Or play some of any of one of your favorite sports, or keep some hobby which you love doing. So through that also you can manage stress. Okay. And the last lifestyle issue which I'll be talking about is arthritis. A lot of people in their early ages are facing knee pain, severe knee pains, joint pains, किसी किसी को elbows में, wrist में, knees में पेन होती है अर्ली एजेस में, लाइक 25, 30, 35, 40 years में ही. In previous generation, people used to face knee pain in their 50, 60s में, but अभी लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि बहुत अर्ली एजेस में नी पेन आ रही है. Why? Again, this is because of inflammation. So if you are facing arthritis, that means the lubricant, अगर आप elbows को आप ऐसे fold कर पा रहे हो या knees को fold कर पा रहे हो, that is because of there is a gummy substance, that is lubricant, which is helping you to fold your knees or elbows, right? So अगर lubricant कम हो जाती है तो उसके कारण आपको बहुत ज्यादा पेन भी आ सकता है, राइट? एंड कैल्शियम की कमी होती है या विटामिन डी की कमी होती है. बहुत लोग सनलाइट में नहीं जाते हैं, घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, दैट मीन्स विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है. ऑलमोस्ट 70% और 65% ऑफ पीपल आर फेसिंग vitamin D deficiency and vitamin B12 deficiency, राइट? सो वी पहले के जमाने में हम बहुत ज्यादा बाहर जाते थे फॉर एवरी स्मॉल थिंग, बट नाउ एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, वर्चुअल हो गया है, तो हम घर बैठे ऑनलाइन सब कुछ ऑर्डर कर लेते हैं. हम बाहर जाना उतना पसंद नहीं करते हैं, राइट? मोस्टली नाइट टाइम्स बाहर निकलते हैं. बट धूप, अगर आपके बॉडी को धूप लगी नहीं रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है, विटामिन डी नहीं मिल रही है, अगर आप खाने में भी विटामिन डी नहीं इंक्लूड कर रहे हो, नी पेन्स, जॉइंट पेन्स होना शुरू हो जाती है. कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओमेगा डेफिशिएंसी,
इसके कारण भी lubricant जो है कम हो जाती है, and that is how people start facing arthritis issue. Again, rheumatoid, there are various types of arthritis, but I'll talk about it later. Okay, so these are the lifestyle issues, and there are many: gastric, bloating, acidity, constipation, migraine, sinus. जेनेटिक्स भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स है तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इट कैन बी. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ इज योर लाइफस्टाइल, राइट, योर इमोशनल वेलबींग, योर फिजिकल वेलबींग. एंड सम पीपल से दैट मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, मैं डाइट फॉलो करती हूँ, प्रॉपर वर्कआउट करती हूँ, बट अगेन they are not losing weight, or they are not getting what they want, they are not achieving their health goal. Sometimes it can be because of emotionally you are drained, emotional well-being sahi nahi hai, emotional cleansing is needed. A lot of times we think negative instead of positive, like nahi ho raha hai, nahi ho raha hai, nahi ho raha hai. Instead of thinking what is not happening, think about what do you want. Positive thinking, right? Emotional cleansing. So these are the lifestyle issues. Now let me talk about कैसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, what is the solution. So the solution is follow diet which is, if you take your plate, at least 20 to 25% of your plate should include proteins, 40-45%, 50% carbs, and remaining 20-25% healthy fats. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स आस्क, फैट्स खाने से फैट गेन होगा, फैट हो जाएंगे क्या? हेल्दी फैट्स लाइक पनीर, घी, बटर, राइट? सो लेट मी आंसर, नो. आप फैट खाते हो तो फैट नहीं होता है. इंस्टेड आप जो बाहर का जंक फूड खाते हो, कार्ब्स plus the combination of simple carbohydrate plus fat like burger, pizza, junk food, noodles, maida, all these are the key for fat gain, right? So healthy fats are in fact good to burn fat, right? So if you take a plate, 25% protein, 40 to 45% or 50% carbs, 20 to 25% of your food should plate should be of healthy fats and fiber, and you can say liquids. Okay, you liquids at least 10 to 15% liquids. ओके, सो अगर आप इस तरीके से डिजाइन करते हो आपके प्लेट को, कॉन्शियसली खाओ, एंड इट्स नॉट लाइक कीप ऑन ईटिंग. Give gap, wait, have patience, and don't think कि मुझे, if you are feeling hungry, there is a reason why you are feeling hungry all the time, because whenever you are eating food, your food is not sufficient or it is not nutritious, you are eating anything, so that will not help. Again you start feeling cravings, तो आपको बीच बीच में cravings होने के कारण आप फिर से खाना start करते हो, right? So that leads to weight gain again. सो इन वन मील हैव न्यूट्रिशियस फूड, ताकि आपको जल्दी भूख ना लगे. ओके, एटलीस्ट 3-4 hours गैप शुड बी देयर इन बिटवीन योर मील्स. नाउ कमिंग टू snacking and munching. Lot of times when we snack, like when we keep on eating, as I mentioned, hormones just goes out of balance. They think like I have to do lot of work, and it keeps on storing fat, so that's how you start gaining weight, right? And the last part, sleep. So first thing हो गया diet, second workout. As I mentioned, it's not necessary to pay expensive gym membership and do workouts, rigorous workout. If you're, if you have that love for gym, you can definitely do. But if you don't like to go to gym and do workout, do a workout at home, or go for jogging, running, or do any home based workout, or play any physical sports. Do have, I mean, have any physical activity in your daily routine, or play any sports, your favorite sport. एक group बनाओ अपने ही apartment में, आप group बना सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो. You can go for cycling, you can go for swimming. Summers are around the corner, you can go for swimming. Just include any one physical activity.
Now, coming to the nutrition part, um, it's very important to have proper nutrition. अगर आपके खाने से आपको सब कुछ नहीं मिल रही है, if you're not getting everything from your food, it's very very important to include proper nutrition, organic nutritions like multivitamins, omega. It's very important to again consult your nutritionist or a nutrition advisor who will help you to gu- uh, give you right guidance. Okay. And yeah, so nutrition include karna bhi sahi hota hai, because it's very important to bridge the nutritional gap. For example, you are getting only 60 to 70% or 50% of nutrition from your food. When you cook, cut or wash the vegetables, almost 40% or 30% nutrition evaporate हो जाते हैं, और आपको क्या मिलता है? बहुत कम, है ना? सो जो जो कम जो गैप है उसको पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, हम छोटे बच्चों को बूस्ट हॉर्लिक्स देते हैं, च्यवनप्राश देते हैं, राइट? सो दैट इज again because of they don't get everything from their food. Okay, I have to quickly plug in the charger. Just give me a second, huh? Prashant, you may come and you may ask questions if the audience are asking questions. I'll quickly plug in the charger. Or you may play that video, please, which I talked All about. right. All right. So, friends, I'm just going to play a video. Just watch it, and Jyoti will be with you soon. Hope you're enjoying. striking people in their early 30s and 40s. I'm sure you must have come across news of number of young actors and actresses or young people in general dying of heart attack, and you might not be too young for a heart attack anymore. And the main reason behind this is our poor lifestyle. That possibly includes smoking, drinking, obesity, lack of physical activity, and consumption of junk foods, which results in the creation of fat and cholesterol deposits, forming layers in the heart's arteries. And if a layer cracks, a blood clot can form. This clot can block arteries and cause a heart attack. So, what can you do to prevent yourself from the high risk of heart attack? Well, maintain a low fat and calorie diet, get a proper sleep of 7 to 8 hours, and do regular exercises like yoga, running, jogging, walking, or swimming. And don't forget to get regular checkups. But how can one know that a heart attack is chasing them? Chest pains that extends beyond 15 minutes, along with shortness of breath or feeling pressure or tightness in the center of the chest, or any discomfort that spreads to the shoulder, arm, back, neck, jaw, teeth, or even upper abdomen, then seek immediate help. So do not ignore symptoms. And to be on the safer side, follow these measures if you ever come in contact with any of these symptoms. Chew and swallow an aspirin or sorbitrate tablet and rush to the nearest hospital. Take nitroglycerin if prescribed and begin CPR if the person is unconscious to keep the blood flowing. So share this video as much as you can with all your loved ones and I'm back. You can Thank you, continue. Prashant, for yeah. Thank you, Prashant, for sharing the video. I hope yeah, you got some insights on how to prevent heart attacks just by avoiding poor lifestyle and making some good habits, following some good habits in your daily life. Give priority. Don't say that नहीं होगा मुझसे, बहुत काम होता है, बच्चे हैं, काम बहुत ज्यादा है, घर को संभालना है. बट इसमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं. बट अगर आप प्रायोरिटी देते हो, तो ये आप समझते हो कि ठीक है, मुझे भी खुद का ध्यान रखना होगा, तभी मैं सबका ध्यान रख सकती हूँ, राइट? Mostly women forget to take care of themselves in their busy schedule, but just give priority and you will be able to do a lot of things. You'll stay fit, right? Mostly post marriage, people, women start gaining weight, post pregnancy weight gain, because of stress, extreme stress, ghar sambhalna. So these are uh, yes, I can understand, but अगर आप priority देते हो, definitely आप खुद को भी healthy and fit रख सकते हो, and you can prevent a lot of lifestyle issues. So I hope you got some insights, and I'm open for questions now.
That's awesome. It's wonderful. I'm really thankful to you for sharing these insights. So, I have some questions here. Also, we had a question in between. The question was how should we manage craving to reverse the lifestyle and weight loss? Good question, healer. So first of all, understand cravings क्यों होती है. If there are lot of toxins around the liver, cravings can happen. If you're not eating सफिशिएंट मील्स लाइक आप कुछ भी खा रहे हो, अगर आपका प्लेट आपके फूड न्यूट्रिशियस नहीं है, फॉर एग्जांपल फाइबर कंटेंट कम है या प्रोटीन कंटेंट कम है या फिर हेल्दी फैट्स कम है, राइट. जनरली हम देखते हैं कि चावल रोटी या फिर इडली सांबर उपमा पोहा, दीज आर द रेगुलर आइटम्स इन आवर ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर, है ना. तो कार्ब्स का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गया, हेल्दी फैट्स कम होते हैं या प्रोटीन कम होते हैं, तो आपका पेट तो भरता है बट आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बाहर जाते हो, एक बर्गर खाते हो, एक बर्गर से कम नहीं होता है, आपको एक और बर्गर खाने का मन करता है ना. वो मन करना मतलब क्रेविंग्स हो रही है. एक पिज्जा खाते हो बस नहीं होता है, आपको एक और खाने का मन करता है, क्योंकि एक बर्गर पे जो आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिली बॉडी को, इसलिए आपका बॉडी क्रेव करता है और चाहिए और चाहिए. तो क्रेविंग्स को कम करने के लिए आप जब खाना खा रहे हो, मेक श्योर योर फूड, योर प्लेट इज न्यूट्रिशियस. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटॉक्सिफाई द लिवर. अगर आपके लिवर के चारों तरफ टॉक्सिन्स जमा है, तब भी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं. एक्चुअली क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए विल पावर नहीं चाहिए होती है. डिटॉक्सिफाई करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, अपने आप आपको क्रेविंग्स कम हो जाती है. Okay, that's good. So, I've got another question like from this question. Uh, as you said that they should have the healthy fats and fibers. So, what should be the healthy breakfast for हेल्दी a common person? Yeah. राइट. सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसे आप रोटी खा लेते हो सुबह सुबह, राइट. रोटी है, अगेन पोहा, इडली, डोसा, इट्स गुड, बट along with that include some fruits और salads और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट. जैसे कि स्प्राउट्स हो गया, हम कहते हैं चना है, मूंग है, ड्राई फ्रूट्स है, दीज आर हेल्दी फैट्स एंड देन प्रोटीन्स. So include that as well along with your whatever breakfast you are having, instead of only half meal. जैसे सिर्फ पोहा खा के रह गए, इडली खा के रह गए, Right. बट ये काफी नहीं है, राइट. हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा खा लिए, नहीं, एक्चुअली आपने कम खाया है, जो खाना चाहिए वो नहीं खाए, वो चीज इंक्लूड नहीं किए. तो अलोंग विथ योर इडली डोसा और पोहा, इंक्लूड सम प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लाइक स्प्राउट्स हो गया, एग्स हो गया, राइट. या फिर पनीर हो गया. कभी कभी सुबह सुबह पनीर खाने का मन नहीं करता है, बट यू कैन इंक्लूड स्प्राउट्स, एग्स, या फिर ऑमलेट हो गया, चना हो गया, सोया हो गया. So these are very good, and along with that include fruits, which is fiber. सो इफ यू आर इंक्लूडिंग फ्रूट्स, मतलब आपका गट जो है हेल्दी रहता है, एंड यू विल नॉट फेस एनी कॉन्स्टिपेशन इश्यूज. या फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द सेशन, lot of people are facing gastric bloating, acidity, constipation issues. This is because of gut, अनहेल्दी गट, मतलब गट माइक्रोबियम. फॉर एग्जाम्पल, हमारे गट में, हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि गुड Right. बैक्टीरिया डाइजेशन करने में इम्प्रूव करते हैं, राइट. इट हेल्प्स इन डाइजेशन. बट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक टू मेनी एंटीबायोटिक्स, या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड हो गया, या अल्कोहल, स्मोकिंग, तो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस क्या होते हैं, गट का जो बैक्टीरिया होता है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ज़्यादा कम हो जाते हैं. बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं. अगर गुड बैक्टीरिया कम हो गए हैं, दैट मीन्स आपका डाइजेशन सही नहीं होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो जा रही है, राइट. Right. If that is less, that means you start facing various issues. Heaviness लगता है, bloating होती है ना, bloating या Right. gastric, and then constipation हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हो आप. Sufficient water, at least 4 liters 5 liters of water is needed.
Right. Yeah. So Okay. balance your gut bacteria. All right. So the next question is again related to this. What is the connection between gut health and weight loss? Very good question. Gut health is, did you hear that your gut is second brain of your body? Whatever you're eating, that is how you're made of, what you are eating, what you're putting on your plate. So if your gut health is really strong, that means whatever you're eating, you're digesting it, right? If you're eating whatever you want, like जंक फूड हो गया, या फिर हम बहुत ज्यादा बाहर जाके खाना खा रहे हैं, लाइक पानी पूरी, नूडल्स या बर्गर, पिज्जा, तो बहुत बार आपने सुना होगा कि ज्यादा मैदा भी खाते हैं तो हमारा गट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। कुछ लोग को ग्लूटेन इंटॉलरेंट होता है, कुछ लोग को मिल्क इंटॉलरेंस होता है, लाइक लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है, राइट? मतलब आपका गट वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, राइट? सो अगर गैस्ट्रिक है या ब्लोटिंग है, हम बहुत सारे खाना, मतलब बहुत सारे फूड आइटम्स अवॉइड कर देते हैं, नहीं खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर गैस्ट्रिक है तो वी कैन नॉट ईट लॉट ऑफ लाइक कैबेज या फिर कॉलीफ्लावर, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ना? और फॉर एग्जाम्पल चना हो गया या फिर मिल्क हो गया, कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इफ यू आर नॉट एबल टू ईट through which your hormones will balance, that means you are not getting sufficient nutrition and hence hormones goes out of balance. तो अगर hormones out of balance जा रही है तो अगेन वेट गेन स्टार्ट होती है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था साइंस बिहाइंड द बॉडी, that's how glucose starts accumulate, I mean glucose starts converting into fat and वो accumulate हो जाती है. Okay. That's good. That's wonderful. The next question is what are common mistakes people make during weight loss? Very good question. During weight loss, people start trying things on their own. They start searching on internet how to lose weight. Some people, I mean, when they follow that whatever generic information they are getting, they start following. It will work for some people, it will not work for some people, because those are generic, it is not customized, right? As I mentioned, body types are different, it's not same for everyone. So customized diet chart, by fixing the root cause, it will help them. And the second mistake, start people start doing intense workout rather than focusing on the root cause, राइट? बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेंगे तो शायद वेट लॉस हो जाएगा, कुछ लोग का वेट लॉस हो भी जाता है बट छोड़ देते हैं तो वापस आ भी जाता है, Okay. right? So it's very important to address all the pillars which I mentioned in the session. So not only workout but also diet, nutrition, sleep and stress management. All एक right. राइट गाइडेंस होता है जिससे कि प्रॉपर रिजल्ट आती है. एंड Okay. वेरी That's इंपॉर्टेंट good. थिंग, या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ लोग जब वेट लॉस करते हैं उनका स्किन बहुत लूज हो जाता है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, दे लुक वीक. वेट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन बहुत ही वीक दिखते हैं, एज्ड दिखते हैं, है ना? वाई? बिकॉज प्रोबेबली दे हैव लॉस्ट मसल मास, नॉट फैट मास. Right. हेल्दी वेट लॉस मतलब फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है. दैट इज हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट. So the next question is how important is your mindset and self discipline in weight loss? Very good question. Mindset. Now lot of people think that कि चलो वेट लॉस कर लेते हैं, प्रोग्राम फॉलो करते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं. माइंडसेट ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में वो एक्साइटमेंट होती है बट एक्साइटमेंट ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है ना? अगर रिजल्ट नहीं आती है तो अरे ये काम नहीं कर रहा, ऐसा सोचते हैं, है ना? बट हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम रिजल्ट्स के पीछे ना भागे, जो एफर्ट्स लगाने हैं, जैसे मैंने जो पिलर्स के बारे में बात किया वो आप फॉलो करो, एंड देन जो एफर्ट्स लगाना है वो एफर्ट्स लगाओ एवरी वीक. And yeah, don't check your weight every day when you're following weight loss program. Check only once in a week, right? अगर आपका वेट कम नहीं होता एवरी डे आप चेक कर रहे हो, that itself causes stress, right? So mindset
ऐसा होना चाहिए कि हम पॉजिटिवली बात करें, ऐसा नहीं ना बात करें कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आप माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि नहीं हो रहा है। आपका माइंड को नहीं पता है कि क्या चाहिए। आप यू हैव टू टेल, यू हैव टू टॉक इन अ पॉजिटिव वे, राइट? सेल्फ टॉक कि दिस इज माय गोल, कीप अ number like target on the mirror or wherever you sleep, and then just observe that and keep talking to yourself in a positive way. That is mindset and self discipline. अगर हम बाहर जा रहे हैं, क्रेविंग्स आ रहा है, या फिर हम सोचते हैं कि अरे एक दिन खा लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, सिर्फ एक दिन बस खा लेते हैं, बट वो एक दिन के चलते आपका वेट अगर फिर से बढ़ जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग लो कि अरे क्यों खाया, वो गिल्ट आ जाती है ना? तो सेल्फ डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है। Exactly. And how can a person maintain a healthy weight once they have reached their goal? Right, interesting. uh lot of times people think, okay, I have achieved my weight loss, now I can eat whatever I want. That doesn't Yes. work. As you have made lifestyle change, you do not go back to your old lifestyle. The process, healthy eating process, which you have learned during your weight loss journey, that's and when you follow sustainable diet, that's how you start following it and make it a lifestyle change. Not for temporary, not for 3 months, 4 months, or 5 months. It's a lifestyle change, and follow the new Right. lifestyle which you learned. Yeah. That's how you can maintain your weight without rebounding. There is something called mindful eating Right. for weight loss. Yeah. So mindful eating. Now, a lot of times we think ki when we go out, we order biryani or pizza, burger. Uh, we start eating. We are not mindful about it. We just unconsciously we order, and then there are friends. We enjoy. We a lot of times we drink, and then uh, पता नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं, है ना? पेट तो भर Right. जाता है, लेकिन वो मन नहीं भरता है ना। तो अरे बिरयानी है, चिकन है, खा लेते हैं आज एक दिन, कुछ नहीं होगा। बट व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग, आई मीन माइंडफुल ईटिंग इज समथिंग लाइक, be conscious about what you're eating. As I mentioned, your plate should contain proteins, carbs, healthy fats, fiber, and then liquids. That will help you to follow, or that will help you to keep fit and healthy. Right. Know what Right. you're eating, know how much you're eating. Okay. That's good. So I'm sure uh, the person who asked this questions has got the answer. So the next question is, what is the role of exercise in weight loss? इसके साथ एक क्वेश्चन और है कि मेन तो एक्सरसाइज का क्या रोल है वेट लॉस में। दूसरा, अगर मैं हेल्दी डाइट लेता हूँ या लेती हूँ, तो क्या मैं एक्सरसाइज को स्किप कर सकता हूँ या योगा को स्किप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? Okay. Now, what is the role of exercise in weight loss? Some people, when they start their weight loss journey, even without exercise, they lose weight, right? Uh, but at certain point, after a few weeks, they start observing कि weight loss नहीं होता है. Because as I mentioned, everything carries some percentage, like diet and nutrition and sleep works. It carries around 70%, and workout works 20 to 30%. है ना? So initially you lose water weight, and hence even though you don't do workout, you'll still see the progress. बट एट सर्टेन पॉइंट जो स्टबॉर्न फैट होता है, बहुत सालों से जो फैट जमा है बॉडी में, राइट, वो स्टबॉर्न फैट जाता नहीं है। तो व्हेन यू डू वर्कआउट, इट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट, इट्स गुड टू ट्रिगर योर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो है आपकी बॉडी में, अगर वो सोया है, अगर वो ट्रिगर ही नहीं हो रहा है, तो वो फैट बर्निंग हॉर्मोन्स को ट्रिगर नहीं कर पाता है, right? So exercise plays very very important role. It's good for your, it's good to manage stress, you know, and then as I mentioned, it's good, it boosts your immune system, it's good to trigger your fat burning hormones. तो आप जब तक प्रेशर नहीं देते हो, फॉर एग्जाम्पल बेली फैट ज्यादा है, तो वहां पे आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप हेल्दी डाइट तो फॉलो कर रहे हो, बट
it's not going 100%, it's going only 60%, 70%. Fill the gap. And Okay. the second question you asked, what was that? Like if I take only healthy food, but I do not go for exercise. Hmm. Okay. So, As I mentioned, yes, it is good when you are having healthy food, and not doing exercise means आप जो खा रहे हो, whatever you are eating, burn that. That's how it converts energy. आप सिर्फ खा रहे हो सो रहे हो, खा रहे हो सो रहे हो, मतलब फैट गेन हो रहा है ना. Your body needs physical movement. It's right, not like sitting at one place eating healthy food. No, your body right, needs physical activity. That's how you feel active the whole day. You feel energetic. Your mind also needs that. Like not only physical activity but mental activity. For example, hobbies हो गया, है ना. तो अच्छा खाना के साथ साथ हमें अच्छा वर्कआउट भी जरूरी होता है. right. Okay, so we But had a question here mhm. from Anurag. Uh, Jyoti ma'am, how can I lose abdominal fat? Okay. How can you lose abdominal fat? First of all, understand what is the root cause. क्योंकि सोचो कि आपके सामने एक पेड़ है. ओके. अगर आप पेड़ को बीच में कट करते हो तो कुछ महीनों के बाद वो वापस ग्रो होता है. अगर वही पेड़ को आप जड़ से निकाल देते हो, इफ यू आर पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द रूट्स, दैट मीन्स द ट्री विल नॉट ग्रो अगेन. Similarly, in our body, when you are just following some temporary methods or solution, you may lose that fat, but again you start gaining that fat, right? But if you are fixing that root cause, that means you're maintaining that, you're not letting your weight come back, right? So abdominal fat, it can be because of various reasons like stress है या fatty liver issue है या फिर diabetes है या फिर thyroid है, क्या क्या reason है इसका. So address the root cause, and that's how, again, the lifestyle change is the solution. Follow proper diet, make sure whatever you're eating, mindful eating, regular workouts, take proper nutrition, and that's how you can lose abdominal fat also. Fat from any place. Okay, that's good. I hope Anurag you've got the answer. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है लाइक अनुराग जी ने पूछा जो हाउ कैन आई लूज एब्डोमिनल फैट. सो दे आर पीपल जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार होते हैं एंड दे गो फॉर सर्जरी, राइट. दे वो क्या करते हैं उस पोर्शन को मतलब निकलवा देते हैं. और डू यू थिंक दैट इट इज़ गुड और दे शुड गो फॉर इट, जिनका वेट Okay. लाइक बहुत ज़्यादा होता है लाइक अराउंड 200 kg and more, they should go Mm-hmm. for surgery. Right. So, I'll talk 2 points here. In the first place, अभी अगर 200 kg तक चला गया, it's very very difficult to manage the body, to go out somewhere, to wear dresses, to eat food, to walk. It's very difficult, right? So in the first place, you can prevent it, है ना. हमें Okay, पता होता है कि अगर ऐसा खा रहे हैं तो ये रिजल्ट आएगा, है ना. हम जैसा भी खा रहे हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी बनेगी. सो इन द फर्स्ट प्लेस यू कैन प्रिवेंट इट. सेकेंड थिंग, अब हो गया जो हो गया सो हो गया, हम करना क्या है ये सोचते हैं, राइट. अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं लाइक बाईपास सर्जरी, सो इस the name of the surgery is something different. It's not coming in my mind, but अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं, that means आप कब तक सर्जरी के लिए जाओगे, उसके बाद क्या, right? Or a lot of times people start, I mean they feel weak after surgery, है ना. उसके right, बाद भी तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना ही है ना. सर्जरी तो कर लिए, बट बार बार तो नहीं करवा सकते ना. हर एक साल में अगर फैट अक्यूमुलेट होते जा रहा है, या हर 2 साल में 3 साल में, इफ यू आर गोइंग फॉर सर्जरी मल्टीपल टाइम्स, बॉडी स्टार्ट्स फीलिंग वीक, है right, ना. सो instead of going for surgery, my suggestion is start making lifestyle change. Let it be slow progress, but धीरे धीरे तो आएगा, है ना. धीरे धीरे तो कम होगा. So that is the right. solution. एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा
कि स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि ज्योति ने कहा, बिकॉज़ दैट टेक्स टाइम। और Yes. एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया, देन डेफिनिटली यू विल प्रोसीड। Yes. There is another question, like how do genetics play a role in weight gain? Is it like, does it happen? Do you believe in that, or is it true? Is it a myth, or what? Right. अ, हमने देखा, हम बहुत बार देखते हैं कि अगर मदर फादर ओवरवेट है तो बच्चे भी ओवरवेट होते हैं कुछ लोगों में, राइट? जेनेटिक्स डू प्ले रोल, एंड लॉट ऑफ टाइम्स इफ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैव डायबिटीज और थायराइड और पीसीओडी, बच्चों को भी आ जाते हैं। बोलते हैं ना Hmm. कि मेरे नानी को ये था, ये इशू था, तो इसलिए ये इशू है। जेनेटिक्स से आते हैं, बट आवर माइंडसेट इज लाइक, अरे जेनेटिक्स है ना इसलिए हो गया। बट यू कैन रिवर्स दिस इन द फर्स्ट प्लेस। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं by avoiding certain things which we don't need in our lifestyle, we can definitely change it. It's not like it's a genetic, you cannot resolve it. It is nothing like that. You can still change it, you can still resolve that lifestyle issue by Right. following the pillars which I mentioned in the session. Okay. All right. That's good. Um, there's another question, like जो लोग वेट लॉस जर्नी अपनी शुरू करते हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसा लाइक डाइट स्नैक है जिसको वो फॉलो करके अपने अंदर जो मतलब जो चेंजेस आ रही हैं, जो क्रेविंग्स होती हैं, या कई बार वो दे फील डिफरेंट, वो उनको रोक सकते हैं? लाइक इज देयर एनी हेल्दी Right. स्नैक्स दे कैन फॉलो? राइट। सो जैसे अभी शाम के समय हम चाय पी लेते हैं, राइट? स्नैक्स के टाइम पे वी स्टार्ट ईटिंग बिस्किट्स, चाय या समोसा, कचौरी, जनरली खा लेते, चलो कोई। बट उससे आपको क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू मिल रही है जो बॉडी को मिलनी चाहिए? नहीं। इंस्टेड दोज आर लाइक डीप फ्राइड आइटम्स which is again putting on weight, causing the weight gain. But instead of that, you may carry a sprout chart, yeah, peanuts, है ना, which is healthy fats, protein, and helping you to fulfill that nutrition value, right? या फिर ऑमलेट हो गया, या बॉइल्ड एग्स हो गया, या स्प्राउट चाट हो गया, मखाना हो गया, लोटस सीड्स हो गया। दीज आर हेल्दी स्नैक्स विच यू कैन कैरी इफ यू आर गोइंग आउट। इफ यू आर एट होम, यू कैन स्टिल ईट दिस, फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, राइट? तो दिस इज गुड इनफ फॉर स्नैक्स। ओके। like some people also, like who are into their daily routine, उन्होंने शुरू तो कर दिया है, but how should they like maintain that healthy habit? कुछ कई बार राइट। ऐसा होता है कि लोग शुरू तो करते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो वापस बैक टू सेम पोजीशन पहुंच जाते हैं। राइट। तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करें? Right. So lot of times when people start following on their own, it's good if you're continuing. Sometimes you may lose motivation, sometimes you may lose consistency, but priority, as I mentioned, priority दो, self talk करो। अगर आप priority देते हो खुद को, for example function आ गया, कोई event हो गया, या फिर friends आ गए, तो खुद से आप बोलो कि I am on this journey, and be wise, like choose your food wisely. You eat, but choose your food wisely कि क्या खा रहे हो, mindful eating, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, because वो hamper कर सकता है आपका weight loss progress को। So right guidance is also very very important, क्योंकि I'll talk about one example. One of my client, she was losing inches every week, but her weight loss progress was like 300 grams 500 grams per week, बट उनका इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा था। तो शी वाज लाइक, अरे मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, बस तो 200 ग्राम 300 ग्राम ही कम हो रहा है। Then I told her, see, it's not about the change in numbers on the weighing scale, it's about losing fat. And if you're observing any health benefits, that is very very good indicator of weight loss only। अगर सो अमेजिंग। शी वाज लूजिंग अराउंड 2 इंचेस और 1 इंच अराउंड हर वेस्ट, तो उनका बेली फैट कम हो रहा था, तो वही तो हमें चाहिए।
है ना, फैट लॉस होना है। सो ये आपको नॉलेज जब मिलता है ना, तब आपको लगता है अच्छा हाँ ना, ये तो सही है, राइट। तो फैट लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट rather देन ओनली वेट लॉस। Okay, that's good. My Don't just check second the last. numbers. Yeah, don't just check the numbers on the weighing scale. Check your inch loss as well. Okay, that's good. So my second last question: what advice do you have for someone who's just starting his or her weight loss journey or lifestyle, like issues reversals? Okay. Um, my advice would be understand your root cause if you are on your weight loss journey, why you have gained weight in the first place. uh, Focus on that, fix that root cause, right? Identify it first of all, and then start working on it. With the help of a right coach, your journey becomes easy. If you're trying things on your own, you should be knowledgeable. And every time Google may not work because it's generic, it's not customized. So with the help of the right guidance and hand holding, you will get proper results, and बाद में कोई health issues नहीं आती है। नहीं तो बहुत बार होता है कि अरे हमने एक चीज स्टार्ट किया, उसके वजह से कोई और other health issue आ गई, right? So the Right. proper knowledge is very important. So make sure things fall in right place by when you're doing lifestyle change. Great. Anything? The last question is anything you want to share with the viewers of you, like Yeah. whatever you want to. So I'll share a very interesting story of one of my clients. She is, I mean, last 2 years ago, one of my clients came to me saying that she got married 5 years. It's been 5 years, and but she didn't conceive. She was facing infertility issue, and she tried many things like IVF, which is very painful and very expensive treatment. Every alternate day she had to go for injections. वो बहुत ज़्यादा पेनफुल Right. होता है, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल फॉर हर आईवीएफ ट्रीटमेंट। सो इतना खर्च करने के बाद भी, इतना पेनफुल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है, राइट? कि अरे रिजल्ट नहीं आया, एंड यू नो सोसाइटी प्रेशर्स, लाइक बच्चा क्यों नहीं हुआ, family, society, they start talking, but they don't understand what is she going through, what the person is going through, right? So that was very painful, and when she came to me for following healthy lifestyle program and PCOD reversal, because she was facing PCOD issue, she followed the program. It's been 2 years. She followed for almost 4 to 5 months, and her PCOD is reversed. And after a few months, she conceived. Naturally, she Wow. conceived just by following Great. healthy diet, nutrition, workout. So when she conceived, she was on the top of the world, because ये उनसे ज्यादा मुझे खुशी हुई, बट ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि उनकी खुशी तो कुछ और ही होगी, राइट? एंड लास्ट ईयर शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। Wow. Even I always say, like, it's not their success, it's our success. It's your Yes, success. yes, yes, absolutely, Right. I feel the same. So मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, I get tears in my eyes when I see the results of my client, which and when I help them to achieve their health goal. I absolutely feel blessed to be in this domain, in preventive healthcare domain, and to help and create impact in the society. And Wow. I'm That's looking forward to help many, many, many people and create impact. Uh, there are so many people are there with you in the journey, and I'm sure people who are watching, they will definitely connect with her or help other people to connect with her, so that जिसको जो वो ढूंढ रहा है उसको वो मंजिल मिल जाए। सो Right. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा। ज्योति, इन द रिसेंट ईयर्स शी इज़ बीन अवॉर्डेड एज अ बेस्ट कोच. सो आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू बिफोर वी एंड द प्रोग्राम. सो लेट मी प्ले दिस.
जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की। This is Jyothi Mandal. I am from Jharkhand. We're staying in Bangalore with my sister, and I'm working in the right जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी। You're on mute. So that was amazing, and many congratulations to you, Jyoti, for this award. And Thank you so much. so, thank you so much once again for sharing your insights and expertise on this topic of weight loss and lifestyle issues with every one of us today. आपकी जो टिप्स हैं, आपकी जो एडवाइस जो आपने दी हैं, आई एम श्योर दीज आर इनवैल्यूएबल फॉर एवरीवन, और किसी ना किसी रूप में उनको कहीं ना कहीं उनके हेल्थ और वेलनेस गोल्स को अचीव करने में वो उनकी हेल्प करेंगे. I appreciate you taking the time to join us and share your knowledge to every one of us. Thank you once again for turning in and participating in this discussion. Thank you so much, And Prashant, for inviting me, for having me here. I'm glad to get this opportunity, and I hope I created some awareness and I added some value for the audience. And thank you so much again, once again. you have actually given a lot of value to the people here, and I'm sure that you found it helpful and informative. So friends, don't forget to subscribe to the channel and for more content like this. And we will be back next time, next week, with a new speaker. Also, till then, what I'll do, I will mention Jyoti's contact number and her details to connect in the description box. You can connect with her if you are seeking any help. So, thank you so much once again, and thank you so much, Jyoti, and to all the Thank you. viewers. Namaste. Thank you. Bye bye.